chamber of heart has the thickest wall? Right atrium, no. Left atrium, no. Right ventricle, no. Left ventricle, yes. This is correct option. The normal blood pressure of healthy human is 120 by 80. Yes, this is correct option. This is the normal blood pressure of a healthy person. Which blood vessel carry deoxygenated blood? So, which vessel carry deoxygenated blood? Aorta? No. Pulmonary artery? Yes, pulmonary artery is correct because ये जो है हमारे ये राइट वेंट्रिकल से जाती है लंग्स की तरफ और ब्लड लेके जाती है और वहाँ पर वो ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम में जाता है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, उसके बाद बॉडी में जाता है. सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी द पल्मोनरी आर्टरी. Pacemaker of heart is AV node, SA node, bundle of His Purkinje fiber. So correct option is SA node. And अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि which one is pacesetter of heart, so that will be AV node. But for now, the correct option here is beta. In human, double circulation means blood passes once. No, blood passes heart twice in one complete. Yes, this is correct option. Which of following has no nucleus in mammals? So WBCs, RBCs, platelets, both B and C. So yes, RBCs और platelets दोनों में ही न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी होगी और WBCs में न्यूक्लियस होता है. The valves between left atrium and left ventricle is bicuspid और mitral valve. अगर राइट यहाँ पर लेफ्ट नहीं होता, राइट होता तो वहाँ पर हमारा आ जाता ट्राइकस्पिड valve. But because they are asking about the left side, so bicuspid valve is correct option. Lub dub sound is produced due to closing of heart valve. Antibodies are produced by RBCs, platelets, lymphocytes. Okay, lymphocytes are correct option. Which component is responsible for blood clotting? So platelets are correct option, and was 2022 question.